Hello dear students, welcome back to the economics class. This is Sandeep Kumar, economics faculty at Shiv Jyoti Educational Group Kota. So today in this class we are going to discuss about the chapter 4 of Indian economy by the name of poverty. So dear students, today here we are to discuss about the chapter 4 poverty of Indian economy. As we all know that poverty in India, it has been continuously a challenge for Indian economy. After the partition of the country, as we can say earlier it was known as Hindustan, when there was a partition in the year 1947, Pakistan went there and we were now Indians. Being Indian, after that onwards only we have been facing the poverty in our India. What are the reasons behind that? अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बेटा हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी रैपिडली इंक्रीज हो रही है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? आई थिंक सो दैट रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यहाँ जो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दैट सेक ओनली वी हैव बीन सफरिंग बाय द पॉवर्टी, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं और वी कैन से हायर द कंज्यूमर्स बट लेसर द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज, इट कॉजेज द पॉवर्टी. Apart from this, illiteracy is there. I mean to say that still there is illiteracy in the country. Due to illiteracy, many of the people are there in the country, those who are still not able to get employment, which increases the unemployment as well. So now, if people are getting unemployed in the country, definitely they will not be able to fulfill their basic necessities. Their living standard will decline only. These are the reasons of the poverty. So today in this video we will basically cover meaning of the poverty, types of the poverty, identification of a poor. That means how can we recognize the poor, as we have been discussing this word so long back ago that there are so many poor people in the country, but how can we recognize what are the properly identifications of poverty? And the last one is poverty line. So now let's proceed towards the meaning of poverty. So this is here we have the meaning of poverty. Poverty is a social situation in which a section of society is unable to fulfill their basic minimum requirements. That means we can say that poverty or the people, those who are belonging to the poverty, are the properly a chunk of the society, or we can say they are a particular quantum of the society, those who are not still able to fulfill their basic necessities. But what are the basic necessities? The minimum requirement or the basic necessities includes food, clothing, housing, education and health facilities. For a general survival, people basically require food. For having, definitely it is more required. Clothing is required, housing, education and health facilities. That means in the other aspect we can say that people, those who are not still able to fulfill these of the basic necessities, they people come under poverty. Now in this way we can say that who are poor, to whom we can say that who people are poor. People who do not have sufficient income to fulfill their basic necessities or bare means of living. As in the previous slide I told you that people or the chunk of the society or the quantum of the society, people those who are not able to fulfill their basic necessities. Why they are not able to fulfill their basic necessities? Reason is very specified. Maybe they are unemployed, or they are not having the sufficient amount of the income for the purchase of these type of goods or to fulfill their basic necessities as well. The situation in which the number of people earning is less than the number of mouths to eat and the people are unable to have a minimum level of well-being leads to poverty. Definitely when there is a single earner in the family, just giving an example, when there is a single earner in the family but consumers are more, suppose there is a family only father is earning but rest wife is there, means mother is there and 4, 5 or 6 children are there in the family. So now let me know, by getting any of the only small occupation by father, how can he fulfill all the basic necessities of all the family members? It creates a trouble in the family.
इस तरह से गरीबी और ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम से वो अपनी सभी तरह की बेसिक्स नेसेसरीज को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, और इवन फैमिली में इतने सारे मेंबर्स हैं तो सभी को उनकी नीड्स को फुलफिल करना होगा, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. Now there are some indicators of poverty, that how can we indicate the poverty. The first one is level of the income. As you have seen, due to the income level also poverty increases. As you can see, if income is lower then definitely consumption will be higher, because there is the thing children, हम अपने consumption expenditures को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और वी कैन से जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट जो कि हमें रेगुलरली रिक्वायर्ड हैं, उन्हें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब तक हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है, बट नॉट द इनकम. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि इनकम भी इंक्रीज होगी साइमल्टेनियसली. So there are two types of indicators. The first one is social and another is political. In the social you can see huge population and low life expectancy. Here the term low life expectancy, what does this mean? At the time of independence, the life expectancy rate was only 32 to 34 years. But later on, after the development in the country, better facilities, better health infrastructure, now it is about 67 to 68 years. What is its life expectancy actually? होता क्या था बेटा, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा malnutrition या फिर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होना, ज़्यादा हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी. इस वजह से बेटा बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की कुछ ऐसी डिजीजेस फेस करनी पड़ती थी जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती थी. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि इट इज़ कंपल्सरी कि 32 ईयर्स के बाद हर एक पर्सन को मर जाना होगा. इट इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड, बट दिस वाज द ओनली लमसम एज कि इतनी ज़्यादा डिजीजेस या फिर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल ना होने की वजह से एक एक्सपेक्टेड एज मानी गई थी, दैट वाज ओनली 32 ईयर्स. बट लेटर ऑन आफ्टर द डेवलपमेंट or provision of the many of the health infrastructures, now it is estimated at 67 to 68 years. Okay, next one is high birth rate and death rate. Still it is a problem, as we know that India stands on the second place on the matter of the population in the world. The first one is China and second is India. Okay, so higher the population but lesser the resources. इट मैटर्स अलॉट बेटा कि पॉपुलेशन तो रैपिडली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कंज्यूमर्स की रेट तो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बट व्हाट अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड हैं, दे मे बी नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज एज वेल. तो किस तरह से प्रोपोर्शनेटली हम सबकी डिजायर्स को फुलफिल करेंगे? अगेन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी. नाउ some of the indicators are related to political issues also. So there is unavailability of houses and education. As I have told you कि population increase होती जा रही है बेटा, so definitely accommodation facilities भी required होंगी. तो उसके लिए क्या किया जाए, और इसका एक adverse effect हमें देखने को मिल रहा है on the agriculture और on the forestry departments. Why? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बेटा, दे पीपल रिक्वायर्ड अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, रहने के लिए घर चाहिए, तो गवर्नमेंट कहाँ से घर प्रोवाइड करवाएगी सभी को? सो फॉर दैट सेक गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, एक स्टेप लेती है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू द कॉलोनीज, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा देती है, और जो भी सिटी के आसपास सराउंडिंग एरिया में जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनको भी प्रॉपरली अब अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ में लिया जा रहा है. Again, it is a adverse effect on the ecological system. And the next one is poor health and food nutrition. The same problem occurs when there is no income level of the individual. How can he get better health facilities? जब किसी पर्सन की इनकम ही ज़्यादा नहीं होगी तो do you think कि वो बहुत अच्छी health facilities gain कर पाएगा? Quite impossible. It is not possible, children. Okay? तो ऐसी जब possibilities decrease हो जाती हैं, so definitely it again increases poverty in the country. Another topic which we are going to discuss today,
that is types of poverty. Means to say there is not symmetry in the poor people also. That means there are different categories of the poor people. Maybe it happens that some people are poor seasonally only. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ओनली सीजन वाइज गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनको सीजन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट गेन होता है. तो जब एम्प्लॉयमेंट गेन होगा देन द पीपल कैन इजिली फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. और व्हेन द पीपल आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, means without the season, the people again become poor. Some poor people are getting in and out rapidly. Okay, so such type of many categories are there or types of the poor people are there. So the first one is absolute poverty. What does this mean? It measures poverty in relation to the amount of money necessary to meet basic needs such as food, clothing and shelter. To measure absolute poverty, the concept of poverty line is used. What does this poverty line mean? ये भी बेटा हमारे आज के लेक्चर का ही पार्ट है. As earlier I have told you in the topics कि हमें आज poverty line को भी पढ़ना है. ये चीज़ मैं वहाँ दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, उससे ये भी चीज़ आपको इजीली क्लियर हो पाएगी. Okay? Another thing is that in India, rural people spending less than rupees 816 means 816 and urban people spending less than rupees 1000 on consumption per month in 2011-12 are treated as below poverty line. Means the criteria has been decided of the expenditure. जो भी इनकम रिसीव हो रही है that is not the part of this. हमें यहाँ क्या देखना है बेटा? Only the expenditure amount of the people. But people are categorized as urban and poor. Reason is that हमारी कंट्री में बहुत सारा ऐसा एरिया भी है जो कि रूरल एरिया में कवर होता है and many people are there those who are surviving under urban areas. तो बेटा यहाँ हमने इस चीज़ को सेग्रीगेट किया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को मंथ वाइज ओनली कि कुछ लोग ऐसे जो कि रूरल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं and if they people are spending less than rupees 816 per month, and in the case of urban area people are spending less than 1000 rupees, are categorized under absolute poverty. They are absolutely poor. Reason is that if a person is not able to spend 1000 rupees in a single month only, that means he is not having higher income level. अगर इनकम ज़्यादा होती है तो पर्सन का एक्सपेंडिचर भी डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है और अगर इनकम कम हो जाती है तो एक्सपेंडिचर भी उसका रिड्यूस होता चला जाता है. Another type is relative poverty. It refers to poverty across different classes, regions, states or countries. Means this type of poverty varies due to different regions or we can say the geographical areas. Okay. It defines poverty in relation to the economic status of other members of the society. People are poor if they fall below prevailing standards of living in a given social context. Means to say, बेटा यहाँ जो हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन द जोग्राफिकल एरिया. एज यू कैन सी डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स, स्टेट्स और कंट्रीज. कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक एरिया ही हमने ऐसा सिलेक्ट कर लिया है जो कि अपने आप में पूरा पुअर है और वी कैन से द स्लम एरियाज आर देयर जहाँ पे मेनली ज़्यादातर रैग पिकर्स गरीब लोग ही रहते हैं एंड इवन दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज. Now here it is a segregation of the rural poor and urban poor. Under rural poor, people are homeless. There are so many people, those who are not having their own home. Okay, or we can say landless people also here. क्योंकि रूरल एरिया में बेटा यू नो एग्रीकल्चर वर्क वहाँ का एक मेन ऑक्यूपेशन होता है. तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि अपने पैसे का यूटिलाइजेशन करके वो एक पीस ऑफ लैंड को परचेज कर सके. सो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज rural poor. But if we talk about the urban poor, poor people of urban areas picking garbage for survival. That means people those who are rag pickers. Rag pickers होते हैं जाके कचरा उठाने का काम करते हैं, गार्बेज उठाते हैं, उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं और जो उससे पैसा मिल पाता है सिर्फ उससे ही अपनी भूख को मिटा सकते हैं या अपने जो छोटे मोटे खर्चे हैं बेटा वो उन्हें इससे फुलफिल कर सकते हैं.
Now see in detail who are rural poor. Rural poor comprises landless farmers, casual, unskilled workers, etc. As you may have observed beta, in the rural area there are so many lack of facilities. There are not proper literacy, or we can say the proper education system is not there, lack of technology, lack of resources, so many things are there which are not still reachable to the rural area. So due to that thing only, people are still unskilled, and people those who are unskilled, even they are not able to get the manual works. उन्हें कोई मैनुअल वर्क भी नहीं मिलता बेटा, टेक्निकल तो बहुत दूर की बात है, उन्हें मैनुअल वर्क भी नहीं मिलेगा जब तक, तो दैट मीन्स उन्हें कोई अर्निंग सोर्स गेन नहीं होगा. अर्निंग सोर्स गेन ना होना, इट इंक्रीजेस पॉवर्टी अगेन. ओके, here you may have seen landless farmers, people those who are not having their own land, they are known as poor. Casual laborers, that means sometimes they are getting the job or the occupation or maybe some of the work, or sometimes they people don't get. They people are known as casual labor or casual workers. Next is some may possesses land that is only dry or waste land. Sometimes it happens बेटा, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लैंड तो अवेलेबल होती है, लेकिन वो लैंड यूजलेस है, एरिड लैंड है या फिर ड्राई लैंड है, वेस्ट लैंड है, तो उसके ऊपर प्रोडक्शन जब तक नहीं होगा, इट मीन्स उनका लाइवलीहुड वहां से जनरेट नहीं हो सकता, और दे आर नॉट एबल टू जनरेट द इनकम फ्रॉम द सेम लैंड. Now here we have reasons of rural poverty. Why there is an existence of poverty in the rural area? So it is illiteracy. The first and foremost thing is that illiteracy, as earlier I have told you कि कंट्री में illiteracy है, कंट्री में तो illiteracy है ही सही, लेकिन रूरल एरिया में illiteracy ज़्यादा है. ओके, रीज़न अगेन द सेम, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है बेटा, प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता, और ड्यू टू द रिमोट एरियाज़ हम बहुत अच्छे रिसोर्सेज को भी वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं. Point number 2, rapid population growth. Again the same issue is here, rapid increase in the population. Consumers are increasing day by day, accommodation facilities are lesser, food grains and so many other things are there, those are not reachable to the such type of rural areas. Excessive population pressure on agriculture. नाउ सी चिल्ड्रन, यही टॉपिक हम लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट हमारे एक चैप्टर पढ़ेंगे इसी यूनिट में, वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर पे हमारी कंट्री में एक रैपिड प्रेशर क्यों बनता जा रहा है, और वी कैन से कि पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे क्यों है. सो आई थिंक सो द रीज़न शुड बी सो स्पेसिफाइड. In the rural area, more of the people are not having occupations rather than agriculture. एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छा उनके पास और कोई ऑक्यूपेशन ही नहीं ना बेटा. रीज़न, दे आर अनस्किल्ड होते हैं वो, दे आर इलिटरेट, लैक ऑफ कैपिटल दे पीपल हैव, इतना पैसा नहीं है कि एग्रीकल्चर को छोड़ के कहीं और किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें. अपार्ट फ्रॉम दिस, सेल्फ मोटिवेशन, उनमें इतना मोटिवेशन ही नहीं होता है कि वो एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी और काम को स्टार्ट कर सकें. लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर किसी तरह का कोई और ऑक्यूपेशन भी अवेलेबल है और एनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अगर अवेलेबल भी है, उससे वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं. लैक ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज जनरेट या तो नहीं कर पाती है, और अगर पॉलिसी को जनरेट भी करती है तो जो पर्सन एक्चुअली नीडी है, जिस तक उस पॉलिसी को पहुंचना चाहिए वहां तक उस तक वो पॉलिसी पहुंच ही नहीं पाती. दैट इज वाई ऑल द पॉलिसीज बिकम द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन एग्रीकल्चर. द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू कि एग्रीकल्चर के अलावा और क्या क्या ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, दे पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. Lack of proper implementation of public distribution system. There are so many public distribution system related to food grains and all. Basically हर एक पर्सन को जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट फूड की तो रिक्वायरमेंट है ही सही, उसके लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया है, बट समहाउ रूरल एरिया में ये भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से रूरल पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स भी नहीं मिल पा रहे हैं. Now the another thing is that urban poor.
Why people existing in the urban area suffering from the poverty? क्या reasons हो सकते हैं बेटा? So urban poor comprises pushcart vendors, street cobblers, rag pickers and beggars. जो लोग urban area में रहते हैं बेटा, basically उनके occupations क्या है? This you can see vendors they are, फेरी वाले जो लोग गली गली में जाके कहीं कुछ अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं. Street cobblers cobbling work करते हैं they, rag pickers again the same thing, and the beggars, they people are poor basically in the urban areas. They possess pure seeds and live in kacha hut, means with wall made of big mud and roof made of grass, thatches, bamboo and wood. उनके पास बेटा accommodation facilities भी नहीं होती हैं. Reason again the same thing, they are not having that much savings to make their pakka house or to have the buildings. So that is why they are surviving in the huts or the mud huts only. Now we are having some of the reasons for the poverty. Meantime, we have discussed the identification of the poor people under urban area. But now what are the basic reasons of the poverty? So the first is migration of rural youth towards cities. Children, see, there are so many people in the rural area also. Day by day those who are getting literate, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि literate होते जा रहे हैं धीरे धीरे. Now for the search of the work, for the search of the job, or we can say for the search of their livelihood, they are migrating to the urban areas. ओके अब वो अर्बन एरिया में आके अपने जॉब को सर्च करना चाहते हैं. नाउ व्हाइल एग्जिस्टिंग इन द अर्बन एरिया दे आर अगेन इंक्रीजिंग द पॉवर्टी, क्योंकि अब हम उन्हें कहाँ पे काउंट कर रहे हैं? अंडर द अर्बन एरिया ओनली. ओके, और अर्बन एरिया में एग्जिस्ट करने की वजह से पॉवर्टी रेशियो तो फिर से इंक्रीज हो जाएगा. लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग्स. देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया. How is it? Basically we are going through the theoretical parts only, not the practical. This is the only reason in India that many of the people are there, those who are literate by the theory part only, but whenever they go through the fields and all for the practical works they are only nil. They don't have the particular practices or the experiences or the trainings and all. Next is rapid increase in the population. Again the same thing is here, whether it is rural area or the urban area, population is increasing in the entire country, which is increasing the level of poverty again. No proper implementation of public distribution, as we have discussed in the rural area also, that there is also not successful implementation of the public distribution systems, where government is distributing food grains to the people, to the needy people, those who are actually BPL, below the poverty line. Again the same thing is occurring in the urban areas also. Next one is limited job opportunities in the cities. Now again I will repeat the same thing. Consumers are increasing day by day, but we are having lack of resources. There will be any of the partition for the employment in each and every institution or every sector, but what about the people, those who are increasing rapidly? Population तो increase होती जा रही है, participants increase होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हम इतनी job opportunities कहाँ से provide कराएंगे, चाहे वो government sector हो या फिर private sector हो. The next one is inclination towards white collar job. People of the cities or villages, the people are seeking for the white collar jobs. Actually nobody wants hard working money, everybody wants quick money. सब किसी को, हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन मेहनत करके कैसे बेटा? This is the only problem of the Indians. हम शॉर्टकट को सर्च आउट करते हैं जल्दी से, हमें हर एक चीज का शॉर्टकट चाहिए, मेहनत से काम नहीं करना, पैसा नहीं कमाना है. तो यही प्रॉब्लम इंडियन पॉपुलेशन की, जिस वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है. अगर सामने किसी की कोई अपॉर्चुनिटी भी है रिलेटेड टू जॉब, लेकिन अगर पर्सन की डिग्रीज एंड ऑल क्वालिफिकेशन से मैच नहीं होती है, सो दैट टाइप ऑफ पीपल किक दैट सेम जॉब. वो जॉब को किक कर देते हैं. बीइंग अ पर्सन, वो अनएम्प्लॉयड है लेंगे, लेकिन उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते. नाउ हियर वी हैव सम फैक्ट्स रिलेटेड टू पॉवर्टी, such as physically weak due to continuous malnutrition, ill health, disability, etc.
when a person who is not getting the sufficient nutrients, he will be pale and weak to work. So in that condition also people are not able to do work, or there is a particular decline in the human capital formation also, which again increases the poverty, because जब किसी पर्सन के अंदर काम करने की हिम्मत, ताकत, क्षमता ही नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा, बीमार रहेगा, और इस वजह से वो पुअर हो जाएगा, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा, अर्निंग सोर्स नहीं होगा. Borrow from money lenders and pay high rate of interest that lead them into indebtedness. Many people are there. Basically in this topic I will take the example of farmers. This happens basically with the farmers, that they are taking the money from the money lenders, or they are borrowing the amount from the money lenders, but till the time of their death they are sometimes not able to repay the amount. Or money lenders, they implement the compound interest on the farmers, which is higher than simple interest. और इसी वजह से जो फार्मर्स है बेटा, बेसिकली वो डेब्ट ट्रैप्ड हो जाते हैं, और मरते दम तक भी वो अपना जो उन्होंने पैसा उधार ले रखा है वो चुका नहीं पाते हैं, और इसी वजह से वो वापस से पुअर. अब इसकी साइकिलिंग कैसे होती है, पैसा उधार लिया, एग्रीकल्चर में लगाया, ओके, जितने टाइम के लिए लिया था, अगर उससे टाइम एक्सटेंड हो गया अमाउंट को रीपे करने में, तो होगा क्या, एग्रीकल्चर से जितना भी पैसा आया वो जाके मनी लेंडर को दे दिया, तो जो कमाया वो तो अपन ने आगे दे दिया. अब फिर से अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से लोन लेना पड़ेगा. तो दिस इज अ प्रॉपर्ली साइक्लिक कंडीशन, ठीक है, जिसकी वजह से पॉवर्टी वहीं की वहीं रह जाती है. Next is some facts related to poverty. What are the basic facts for the poverty? The one is, do not have access to electricity and water. People are not having such kind of facilities in like slum areas and all, or people those who are poor, they are not able to pay the bills of electricity and water. So that is the only thing, they are not seeking for such kind of facilities as well. Cook food on firewood or cow dung, because they are not able to take the gas cylinders and all, so that's why they are using only firewood and cow dung. Face gender inequality in getting a gainful employment. There is still in country, in our India, there is a gender biasment, that some of the sectors are there where only male candidates are able to get the jobs. But what about the females? If female is also getting the job, definitely she will also earn some amount of the money that will be helpful for the fulfill of their basic needs. And another is, women and children receive less care because they don't have the much amount. If amount is not there, they are not cared properly. Third topic of our today's video is identifying the poor. How can we identify any of the poor? So for the identification of poor in our India, a person by the name of Dadabhai Naoroji, he only took the first step. As you can see, in pre-independent India, Dadabhai Naoroji brought the concept of poverty line. He used the menu for a prisoner and used appropriate prevailing prices to avail at jail cost of living, people those who are surviving in the jail. He appropriately adjusted this cost of living to arrive at the poverty line. Actually, he only identified the poverty line, एक इस तरह की पॉवर्टी लाइन जिससे कि हम पुअर और रिच पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम जिनको इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं. तो ये जो एफर्ट्स हमारी कंट्री में सबसे पहले किसने किया? दादाभाई नारोजी. So here it is, jail cost of living adjusted to arrive at poverty line. He assumed that 1/3 of population consisted of children and half of them consumed very little while the other half consumed half of the adult diet. इन्होंने एक्चुअली डाइट को बेटा थोड़ा सा सेग्रीगेट किया था, कैटेगराइज किया कि सबसे ज्यादा खाना कौन खाएगा? अडल्ट. अडल्ट से कम कौन खाएगा? चाइल्ड, एक छोटा बच्चा. He arrived at the factor of 3/4. इस तरह से इन्होंने बेटा इसको सेग्रीगेट किया, 1/6, 1/6 and half, 2/3 that is full and 3/4 that is full. The weighted average of consumption of 3 segments gives the average poverty line. और इस तरह से इन्होंने इसका एक एवरेज सेगमेंट निकाला जिसके बिहाफ पे पॉवर्टी को सेपरेट किया और पॉवर्टी लाइन को इंट्रोड्यूस किया था.
Now it is here the poverty line. Subsequently in 1979, the task force of projections of minimum needs and effective consumption demand was formed for the determination of poverty line in 1989 and 2005. Experts groups were formed for same purpose, that is again the same thing, a poverty line. It was measured and two categories came into the force. The one was of poor and another was of non-poor people. Those who are surviving above the poverty line, they are APL, or we can say non-poor, but the people those who are surviving below the poverty line are known as poor people. Now last but not the least topic of today's class, which is poverty line, the threshold line that divides people into poor and non-poor. अभी जस्ट मैंने बताया बेटा कि एक इस तरह की assumption based line होती है on the basis of the income and expenditure of the people in the country, और उसी के basis पे हमने two categories को design किया. The one is of poor and the other is of non-poor. That means people those who are able to fulfill their all the needs are non-poor, but the people those who are having the lesser income, even they are not able to do the expenditures for the fulfillment of their basic needs, are called poor people. Here even you can see this is the poverty line, and these people are poor, those who are suffering from absolute poverty. First of all, we have discussed that in the identification. Another is very poor and the third one is only poor. Here non-poor, not so poor, middle class, upper middle class, rich, very rich, and above that they are into the category of non-poor people. Now the question arises that how can we determine the poverty line? Poverty line तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे? So for this sake, the poverty line can be determined by the monetary value or the per capita expenditure. Per capita means per person expenditure of the minimum calories intake. बेटा यहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है 2400 calories for a rural person, that is consumption worth of rupees 816 per person per month. They are talking about the rural person. When there is a person who is not able to spend at least rupees 816 per month, is under the category of poor. But it is in the case of rural area. But if we talk about the urban area, so there the limitation is 1000. Means to say कोई भी एक ऐसा person जो कि अपनी 2100 और we can say 2100 किलो कैलोरीज अर्बन एरिया में गेन करने के लिए रुपीज 1000 का भी एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है इन द अर्बन एरिया, ही इज नोन एज पुअर पर्सन. Now the next is shortcoming of monetary per capita consumption expenditure. There are some negative aspects of the same, which is does not differentiate between very poor and other poor. These are the shortcomings of per capita income or per capita expenditure. Difficult to identify who among the poor need help, and another is government may project false picture of decline in poverty level. These are basically the shortcomings जो बहुत ज़्यादा important नहीं बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए. Now, owing to these limitations, scholars have attempted to find alternative methods for the search out of the poor and non-poor. तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ methods हैं. Some of the people are there, or we can say some of the economists are there in the country, those who have find out different methods or different index for the poor and non-poor. जिसमें से कुछ famous है. One is poverty gap index, another is squared poverty gap, and the third is सेन इंडेक्स. बेटा ये कुछ अलग अलग मैथोलॉजी, अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि हम पुअर और नॉन पुअर को डिफरेंटली कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू डिफाइन
poverty line in rural area is? Let me know. It is talking about rural area. So 2800, 2400, 2500 or 2900. So the answer is 2400. ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए that in the rural people or the rural area people, those who are surviving, they are doing the hard work rather than the urban people. तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, ज्यादा काम करना है तो दैट मीन्स हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. तो जितनी ज्यादा काम हम जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे कैलोरीज रिक्वायरमेंट होंगी. इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा रूरल एरिया में 2400 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि अर्बन एरिया में ओनली 2100 किलो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है. ओके सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया. मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी, types of the poverty, identification of poor, and the last was poverty line. I hope that you have learned a lot with your cognition. So see you all again in the next video. Till that time, keep learning, keep practicing, stay home, stay safe, take care, bye bye everyone.